Hello and welcome back, dear children, to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 8. So, children, this is your English grammar book and the name of your book is English Grammar Plus Skills Unleashed Workbook. So, children, today we are going to do the last chapter of your book and it is chapter number 25 and the name of the chapter is Comprehension. So let's start with the chapter. So children, as you all know that comprehension is a type of unseen passage of poem. In this you get unseen passages of poems and you have to read those and then answer the questions given there. So here the first comprehension that is given is a poem. You have to read this poem and answer the questions that follow. So the name of the poem is Land of Storybooks. So let's start with the poem. At evening when the lamp is lit, around the fire my parents sit. So here the poet is saying कि जब शाम होती है और लैंप जलता है तो मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? फायर के आसपास बैठ जाते हैं. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. So वो बैठते हैं, बातें करते हैं, गाने गाते हैं, बट वो कुछ भी नहीं खेलते हैं. Now with my little gun I crawl all the dark along the wall. So अब मैं अपनी छोटी सी गन लेके क्रॉल करता हूँ, घुटने के बल चलता हूँ, क्रॉल करता हूँ. कहाँ पे? All in the dark along the wall. वॉल के along, वॉल के किनारे किनारे से निकलता हुआ डार्क में पहुंच जाता हूँ. And follow round the forest track away behind the sofa back. तो अब जो है पोएट जो है उस पाथ को जहां से वो निकल के जा रहा है उसे वो क्या कह रहा है? एक फॉरेस्ट ट्रैक की तरह समझ रहा है कि फॉरेस्ट के ट्रैक पे मैं चलता चला जा रहा हूँ. अवे बिहाइंड द सोफा बैक, और सोफा के पीछे वो जगह है वहां वो जा रहा है. देयर इन द नाइट वेयर नन कैन स्पाई, ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई. सो रात में वहां पे कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता, स्पाई नहीं कर सकता, मीन्स ढूंढ नहीं सकता. And in my hunter's camp I lie. So उस जगह को उसने hunter camp में कन्वर्ट कर दिया है. उसे वो सोचता है कि एक ये hunter camp है जहाँ पे वो lie means लेट जाता है. And play at books that I have read till it's a time to go to bed. So वहाँ पे मैं खेलता हूँ, मेरे जो बुक्स हैं उनके साथ, जो भी मैंने बुक्स पढ़ी हूँ उनके साथ, और जब तक टाइम नहीं हो जाता सोने का. These are the hills, there are the woods, there are my starry solitudes. So अब जो पोएट जो है इमेजिन करता है कि यहाँ पे हिल्स हैं, वहाँ पे वुड्स हैं, और जो है मीन्स दिस इज द वेरी प्लीजेंट प्लेस, एंड देयर इज द रिवर बाय whose brink the roaring lions come to drink. So अब जो है वो इमेजिन करने में उसने बनाया कि पूरा जंगल का सीन है और वहाँ पे एक रिवर है, whose brink जिसके किनारे पे द रोरिंग लायंस जो है वो आते हैं. लायंस क्या करते हैं? आके वहां पे पानी को पीते हैं. I see the others far away as if in firelight camp they lay. अब मैंने दूसरों को देखा कि वहां पे आसपास में वो इमेजिन किया जा रहा है कि बाहर वहां दूर दूर तक लोग जो है अपने कैंप के अंदर जिसमें आग जल रही है वहां पे ले मीन्स लेते हुए हैं. And I, like an Indian scout, around that party proud about. और मैं इंडियन स्काउट की तरह वहां पे उनकी देखभाल कर रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ. So when my nurse comes in for me, home I return across the sea. So जब मेरी जो नर्स है जो मेरे ध्यान रखती है वो वहां पे आती है तो मैं घर को वापस चला जाता हूँ सी के किनारे से. And go to bed with backward looks at my dear लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स. सो मैं बेड पे जाता हूँ, उन सारी चीज़ों को वापस से याद करता हूँ जो मैंने भी इमेजिन किया था, खेला था, और कहाँ पे था? मैं अपनी स्टोरी बुक्स की लैंड में था. सो उस जगह को मैं याद करते करते मैं बेड पे चला जाता हूँ, सो जाता हूँ. सो चिल्ड्रन, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. सो व्हाट डू द पेरेंट्स ऑफ द पोएट डू? अब जो यहाँ पे पोएट के जो पेरेंट है वो क्या कर रहे हैं? सो हियर द पेरेंट्स आर सिटिंग, दे आर टॉकिंग एंड सिंगिंग. व्हाट वाज द पोएट डूइंग व्हाइल हिज पेरेंट्स वर busy talking?
So here, when the parents were busy talking, the poet was crawling with his small gun to the corner of the room. Now, like this, children, complete the rest of the work. Now, let's come to fill in the blanks. They sit at home and dash, talk and sing. So, let's write down the answer. They sit at home and talk and sing. And follows round the forest track. So children, like this, complete the rest of the exercise. Now here, where is the boy reading storybooks? In the forest behind the sofa's back. So yes, obviously he is imagining the forest, but he is reading the book behind the sofa's back. What does the boy want to be? An Indian scout, a storyteller? He wants to be an Indian scout. Now children, like this, complete the rest of the exercise. Okay, now we have completed the poem. Let's come to unseen passage. So read the following passages carefully and answer the questions that follow them. Despite their ability to ravage crops and swamps, desert locusts spend most of their 5 months' lifetime as shy, solitary creatures who are incredibly fussy eaters. So here children, हम क्या पढ़ रहे हैं? We are learning about locust. So locust is a type of insect. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो लोकस्ट हैं ये अपना ज़्यादातर टाइम जो है 5 महीनों का जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं कैसे? शाय होके या सॉलिटरी मीन्स अकेले होके. वो आर इनक्रेडिबल फसी ईटर्स, ये बहुत ही ज़्यादा फसी ईटर्स हैं, मीन्स किसी भी चीज़ को ईजिली नहीं खा सकते. They know better than most humans how to regulate their food intake and ensure that they eat a balanced diet. So humans से बेहतर इन्हें पता होता है कि इन्हें अपनी balanced diet को कैसे लेना. A swarm of desert locusts move around. They are held together largely by what smell the humans like sour beer. So ये जो swarm of desert locusts की बात हो रही है जो desert में रहते हैं, ये क्या करें? मूव अराउंड मीन्स घूम रहे हैं. दे आर हेल्ड टुगेदर लार्जली बाय मीन्स उन्हें एक स्मेल आ रही है और क्या थी? टू स्मेल टू ह्यूमन लाइक सार बियर. दिस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया लिविंग इन द लोकस्ट गट. सो लोकस्ट का जो गट है वहां पे एक तरीके का बैक्टीरिया रहता है जिसकी वजह से ये स्मेल आ रही है. These are and other strange facts about the desert locusts have recently been discovered by scientists working in the universities of Bath, Southampton and Oxford in the United Kingdom. So जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च करें लोकस्ट पे, डेजर्ट लोकस्ट पे, और उन्हें ये बात पता चली है कि इनके अंदर से एक स्मेल आती है. Swarms of desert locusts periodically devastate crops in 60 countries around the tropical world. So ये क्या करते हैं? क्रॉप्स को खराब कर देते हैं. 60 से ज़्यादा कंट्रीज में ट्रॉपिकल एरिया के जो 60 से ज़्यादा कंट्रीज हैं वहाँ पे इन्होंने क्रॉप्स को खराब कर दिया है. They are capable of consuming their own body weight. So ये इतने केपेबल होते हैं कि ये खुद के बॉडी वेट मीन्स इनका जो वो बॉडी वेट है वो 2 ग्राम का है ऑफ फूड एवरी डे. तो इतना ये कंज्यूम कर सकते हैं. The larger swarm are composed of billions of locusts. So जो इनका जो larger swarm है उसके अंदर billions of locusts हैं, covering several hundred square kilometers and traveling up to 130 kilometers a day. So इतना ज़्यादा ये आगे चल सकते हैं. For swarming locusts, the sense of taste plays a vital role in affecting decisions about feeding, the selection of egg-laying sites, and the avoidance of noxious chemicals, says Dr. Philip Newland of the University of Southampton, whose research group is investigating how desert locusts literally taste their environment. So ये जो साइंटिस्ट है they are researching कि कैसे इन्हें पता चलता है कि किस environment में जाना है
और कैसे ही उस एनवायरनमेंट को टेस्ट करके वहां पे आक्रमण कर देते हैं. Locust sense organs are quite unlike our own and they experience the world in a very different way from us. So locust का जो sense organs हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन their experience to the world is very different from us. They smell and taste the world around them through microscopic hairs. तो उनके बॉडी पे कुछ माइक्रोस्कोपिक बहुत ऐसे हेयर्स हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे. So ऐसे हेयर्स हैं जिसके थ्रू they can smell and taste, which cover their legs as well as their mouth parts. So वो हेयर उनके लेग में और माउथ पार्ट में होते हैं and are sensitive to touch as well as chemicals. So ये chemicals का जो मतलब उसको जैसे वो टच करते हैं they are very sensitive to it. Chemicals enter the hair through holes on their ends and stimulate sensory taste cells inside each hair. So chemical जो है इनके hairs के थ्रू इनकी बॉडी में एंटर करते हैं और वो इनके सेंसरी नर्व्स को एक्टिव कर देते हैं. The researchers led by Dr. Philip have given locust several kind of foodstuffs such as salts, proteins and carbohydrates to taste with their hairy legs. So ये अपने legs से ही कुछ भी चीज को उनके जो है legs के जो hair है उससे ही वो किसी भी चीज को taste कर सकते हैं. So scientists ने ये सारी चीजें इन्हें दी थी for tasting. Dr. Newland and his colleagues measured the response of the locust to different concentrations of these chemicals. So Dr. Newland ने और उनके colleagues ने उन्होंने measure किए different responses, अलग अलग locust को test किया और उनके responses को test किया by seeing what concentration of chemicals were required to make locust move away. So कितना concentration देना चाहिए, chemical कितना देना चाहिए जिससे वो locust move करें. And by studying the electrical response of the brain to them, ways may be found to damage the locust nervous system with selective chemistry or to block its aggregatory phenomena or use them to mislead a swarm and direct it away from the crops, or its trap of or locust might be misled into accepting poison as food. So ये सारे जो in the last paragraph you can see कि these all things the doctors are or the scientists are searching कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे locust को उस जगह से हटाया जा सके, crop से दूर रखा जाए और वो poison को ही अपना food समझ ले. So now children, after reading the paragraph, you have to complete the table. Here you have to write down the lifespan of locust, its food habits and the sense organs. So this is your homework you have to write down. Now complete the following sentences. The strong odor produced by locust. किस तरीके के strong odor produce करते हैं and the locust can be destroyed by कैसे उन्हें destroy किया जा सकता है. Mention the role played by the sense of taste in the life of the locust. So children, you have to complete this exercise on your own. And with this, we have completed the comprehension. I hope that you have understood how to comprehend, how to answer the questions, read the questions first, and then read the passage or the paragraph or the poem, and then you will find the answers more easily. So children, if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay late.